हाय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर जो मैंने आपके साथ लाइव रह के शेयर किया था, लेकिन स्टूडेंट्स का फीडबैक आया कि थोड़ी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आई एम गोइंग थ्रू द सेम क्यू कार्ड वंस अगेन जस्ट फॉर यू एंड गोइंग टू मेक दिस वीडियो लिटिल क्रिस्प एज वेल. The cue card is talk about the time when you decided to wait for something. The fact is that ज़्यादातर हम किसी चीज़ को बाय करने के लिए ही वेट करते हैं, तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है talk about a time when you decided to wait for something to buy. The cues can be when it was, what you had to buy, why you decided to wait, and how it benefited you. तो आइडिया मैंने बहुत ही सिंपल बताया था आपको. हम डिसाइड करेंगे कि अभी जो मुझे फ़ोन चाहिए, क्योंकि आपका फ़ोन पिछले कुछ समय से आपको बहुत परेशान कर रहा था, आपने डिसाइड किया कि इसे रिप्लेस कर देना चाहिए. आप गए एप्पल स्टोर, क्योंकि आपका ये ड्रीम था कि इस बार आप एप्पल फ़ोन ही लेंगे. जब आपने वहाँ पर फीचर्स वगैरह चेक किए, सब कुछ देखा, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आईफोन 13 इज़ द वन दैट यू आर गोइंग टू बाय. वापस आए, आपने अपना जो एक्सपीरियंस था पेरेंट्स के साथ शेयर किया, मनी अरेंज की और अगले दिन फ़ोन बाय करने का प्लान था. लेकिन लेटर इन द इवनिंग आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा टेलीविज़न पर विच वॉज अबाउट द लॉन्च ऑफ आईफोन 14 और यहीं पर आपने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इसके फीचर्स को एक्सप्लोर किया जाए. आपने वेबसाइट चेक किया ऑफ द आईफोन 14 एंड देयर यू गॉट टू नो कि इसके पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी मोबाइल में नहीं है एट प्रेजेंट इन द मार्केट. और आपने यही सोचा कि क्यों ना थोड़ा टाइम वेट कर लिया जाए और बिल्कुल लेटेस्ट डिवाइस जो है उसे बाय किया जाए, क्योंकि सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर 14 लॉन्च होता है तो 13 के भी प्राइसेस जो हैं वो ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाएंगे. तो आइए देखते हैं इसी को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर एज अ सैम्पल आंसर. यहाँ पे आपको सैम्पल आंसर नज़र आता रहेगा और साथ के साथ आपके पास रहता है ramanIelts.com वेबसाइट का एड्रेस और मेरे एप्लीकेशन पर स्पीकिंग बूस्टर को अनलॉक कैसे करना है, इसके 5 स्टेप्स. आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे अपनी IELTS स्पीकिंग प्रिपेयर करनी है. आइए स्टार्ट करते हैं. द सैम्पल आंसर दैट द वे यू शुड बी प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर टू एक्सपेक्ट गुड बैन. Well, when it comes to buying something, people often get impatient. They want to buy the things instantly, and I'm not an exception. But here I would love to share my experience when I rather decided to wait for something to buy, and it was just few months ago when I had to replace my mobile phone. The fact is that my old device was troubling me a lot. I decided to replace it with a new handset. It was my dream to buy iPhone for a long time, so I decided that this time I will surely buy an iPhone. I visited the iOS store in my city where I checked out all the latest devices of this brand, and with the help of the store person I ended up selecting iPhone 13, the most stylish and feature loaded phone of this brand. Now I came back home and shared my experience with my parents, and I also arranged money to buy it the next day. But later in the evening, while watching television, I came across the advertisement which was about the launch of iPhone 14. I instantly checked out the website of iPhone to explore the features of this device, and I must say that I found few of the features, especially the camera quality, and this was the time I decided that I will rather wait for the launch of the new handset, because once iPhone would be launched, the price of iPhone 13 would drop drastically, and that's the reason why I waited, and I was among the first buyers to buy this latest mobile, and it all happened just because I decided to wait for some time. And that's it. I hope you comfortably follow the sample as usual. Share in the comment section what other videos you want me to share with you, and never forget to leave a comment for me and motivate me by hitting the like button. This is very much all. Bye bye for now.